having method like getInfo and setInfo. Here we are creating a child, and child is inheriting information from two parents, parent A and parent B. So inside child class there is no information, but object of this C are able to access the information like getInfo and setInfo. That is the part of parent class. So that's the example of multiple inheritance, because here we are using two parents that access the information and functionality. Child can able to access the information and functionality of A and B class. But if we are using multiple inheritance, there is some problem. Let's discuss the problem. What's the problem which we are facing in multiple inheritance? When we are creating an object of this C class, so which parent is active, that we have to check, or both parent is active. When we are creating an object of C class, so is there automatically the object of A and B class is also created? That we have to check, right? So how we can check? Let's see. Just a minute. सर ये आपका बैच का जो है पाइथन वाला बैच का ये आपका क्या है ऑफलाइन का टाइमिंग? पाइथन वाला बैच का टाइमिंग नहीं ऑफलाइन का कौन सा ट्यूसडे थर्सडे? ट्यूसडे थर्सडे है ना? सॉरी, मैं जय सर बड़ा प्रेशर दे रहे हैं सर। क्या ऑफलाइन के लिए दोनों बैच का ही है ना? नहीं, उसका वेडनेसडे और फ्राइडे। ये कौन सा है? 640 है ना? 7248 है। 7248 7248 है, याद है ना सर? कंफर्म एकदम। और दूसरे वाला सर 6401। हाँ 6401 का है वेडनेसडे और फ्राइडे। आज है ना सर? बोलना पड़ेगा इनको, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। So now I want to check, when I am creating an object of this C class, so which parent class is active, which parent class is initialized. Just I want to check. So how we can check? So for this we can create init method. Init method. So when init method is called, whenever object is created, init method is automatically called, right? So print A class init method, right? And here in B class also, we can define init method just to check which init method is called. Print B class init method called. Let's see what happens in this case. When we are creating an object of C, what happens in this case? When I run this code, when I run this code, what happens in this case? Just see. A class init method is called. A class getInfo method is also called. B class setInfo method is also called.
but B class init method is not called, right? It means what? When we are creating an object of C, by default, A class is initialized. So only we are able to access the information and we are able to access the data from a class. Let's see. Suppose inside this init we are having a data called message. Suppose. So inside a class we are having a data called message, right? And here I am writing self.message is equal to message. So here I am writing like this. I want to call this init method. Here we are having some information like message. I want to use this message. I want to use this message inside this C class. So here we are able to access the functionality of a class, like get info is the functionality of a class. We are able to access. Are we able to access this message also? Let's check. Like print obj dot. If I'll write message, no, I'm not able to access the message. Let's see. When I run this code, what happens in this case? Now we are not able to call this init method. Init method कॉल नहीं हो रहा, पहले कॉल हो रहा था. By default, A is initialized, but when we are writing here a parameter msg, now we are not able to initialize this parent. Let's see what happens in this case. आप A क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो C क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो. क्या C क्लास में कोई पैरामीटर है, कोई इनिट मेथड है? नहीं है. A क्लास में इनिट मेथड है. तो अगर इनिट मेथड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, इट्स ब्लैंक, तब तो ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा. इसको रन करते हैं. बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है और ये काम भी कर रहा है. ये एरर यहाँ पे दे रहा होगा. इट्स वर्किंग. init method is called. But when we are adding some parameters, we are not able to call this a method, a class, because a class init method need a parameter called message. इसको message चाहिए कॉल होने के लिए, लेकिन C class कोई मैसेज पास नहीं कर रहा है यहाँ से. Now the program is throwing error. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो आपको अभी देखो मैं सिर्फ प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन के बाद में आएंगे. पहला प्रॉब्लम ये है कि in the case of multiple inheritance, only we are able to initialize a single parent. दूसरा प्रॉब्लम ये है, if a single parent is having parameterized init method and child don't have any parameterized init method, so we are not able to initialize our parent. तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है. तो दो प्रॉब्लम अभी आपको दिखाया, तीसरा एक और प्रॉब्लम है. तो हम लोग एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. पहले मैं आपको प्रॉब्लम सारा दिखा रहा हूँ कि क्या आ रहा है. इसको अभी मैं हटा देता हूं. अब तीसरा प्रॉब्लम क्या आएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में, लेट्स सी. What's the third problem? Suppose
A class is having a method getInfo and B class is also having a method getInfo. Now both class is having the same method, right? Both class is having the same method. So when I'll call obj.getInfo, what happens in this case? Because there is some ambiguity. A क्लास के पास भी गेट इन्फो है, बी क्लास के पास भी गेट इन्फो है. So in C++, if you will write like this, obj.getInfo, the program will throw error. बोलेगा ambiguity generate हो रहा है. Program will throw error. Even in Java also program will throw error. Java में multiple inheritance तो होता ही नहीं, वो Java में नहीं होगा ऐसा. In C++ there is a problem. And to resolve this problem, C++ use an operator called scope resolution operator. किसी ने पढ़ा होगा तो याद होगा. But in Python, the concept is slightly different. Just see. When I run this code, we are able to access the getInfo method. Error नहीं दे रहा है. लेकिन कौन सा getInfo कॉल हो रहा है? A क्लास. जो पैरेंट इनिशियलाइज हुआ उस पैरेंट का getInfo कॉल हो रहा है, राइट? देन व्हाट्स द यूज ऑफ दिस बी? अब सारा काम ये से ही हो रहा है तो बी का क्या मतलब है? तो ये सिंगल इनहेरिटेंस ही हो गया. अभी तक का कहानी तो यही है ना. बी का तो कोई रोल आया ही नहीं यहाँ पे. So it's behaving like a single inheritance. तो पाइथन ये फीचर आपको दे रहा है कि by default if you are using multiple inheritance, so in that case also it's behave like a single inheritance, right? So how we can resolve this problem? सर ये ऑफलाइन के लिए बोल रही है सर, बहुत मना नहीं कर रहा. बोलो ना सर इनको. उस दिन 10-12 बच्चे आए थे, अभी नहीं आ गए. आपको बोलना. आप ही बोलो सर. अरे बोलो मैं तो बोलता ही रहता हूं. एक बार बोलो. सभी लोगों को ना ऑफलाइन आना कंपलसरी है. सर ने बोल दिया है, हेड ऑफिस से कॉल आया है. और एक आया था ना कल, कौन सा डे है इनका? ट्यूसडे एंड थर्सडे आप लोगों का ऑफलाइन सेशन है, तो प्लीज उस दिन आ जाया करो आप लोग. ठीक है? कोई बोल नहीं रहा है. ओके सर आ जाएंगे. ओके जी. कम से कम एटलीस्ट 2 दिन ही आ पा रहे हो तो एक दिन आ जाया करो, ताकि हम लोग आप लोगों को दिखा सके ना कि आप लोग आ रहे हो. ठीक है? प्लीज. ठीक है? ओके जी. ओके. So now the offline session is mandatory, right? Offline में ही आना पड़ेगा आपको. You have to join your offline session also. I'll talk about this in after finishing the session. So, okay. So, what's the problem which we are facing in multiple inheritance? Now tell me. How many problems I have discussed here? Three problems. What's the problem? पहली प्रॉब्लम ये है कि सर जो क्लास चाइल्ड सी है वो एक टाइम पे एक ही पेरेंट को कॉल कर रहा है. Okay. और
और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस ही परफॉर्म हुआ एक टाइम पे, बट हम कर रहे हैं मल्टी लेवल, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें। If you are having same function in two parents, right? If you are having same functions in two parents, so that will create ambiguity. So by default, one class function will be called. So by default, we are not able to access the functionality of uh, two classes or more than two classes. That's also a problem. Now, how we can resolve such type of problem? Next question ये है कि मुझे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, राइट? पहला ये कि ए क्लास का सिर्फ इनिट मेथड कॉल हो रहा है, मीन्स ओनली ए क्लास इज इनिशियलाइज, बी क्लास इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, राइट? If we are having same method in A class and we are having same method in B class, if I'll call this method using the object of child class, so in that case only we are able to access the information of first parent like A. We are not able to access the information from second class like B. So how we can resolve this problem? So to resolve this problem now, I have to introduce one more concept. That concept is called super. Right? In Python, there is a keyword called super with C. So what's the use of super keyword in Python? Let's see. सर ये दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज ला देता है सर। दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज लाता है। maybe. Okay. Let's see. In Python, super is used to call method from parent inside a child, right? तो अगर मुझे पेरेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन चाइल्ड में चाहिए, so we can use super keyword. Just see. Suppose if we are having a class animal and inside this we are having an attribute called name and one more method is speak, right? Here is one more class dog that's inherit the information and functionality of its parent. Here I am using init, but problem is what? Inside this init we are having two parameters and inside this we are having one parameter, right? तो by default एनिमल वाला जो ऑब्जेक्ट है या जो इनिट मेथड है ये बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा, क्योंकि इसको कॉल होने के लिए क्या चाहिए? नेम. So when we will create an object of dog, or I'll pass this two information like name and breed, तो ये एनिमल को कॉल नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एनिमल को कॉल होने के लिए क्या चाहिए? नेम. तो उस केस में मुझे ये वाला जो इनिट मेथड है या ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसको चाइल्ड क्लास में कॉल करवाना पड़ेगा, राइट? जैसे अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा था. प्रॉब्लम क्या था कि मान लो ये मेरा है ए क्लास और इसमें मैंने लिखा था मैसेज, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा था मैसेज and here we are using self dot message is equal to message. तो अब क्या होगा? अब पेरेंट वाला इनिट मेथड कॉल नहीं होगा.
अभी ये क्लास का इनिट मेथड कॉल हो रहा था, अब नहीं होगा, जिससे एरर जनरेट हो जाएगा। लाइन नंबर 18 पे एरर आ रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वी आर नॉट एबल टू कॉल parent class init method. So how we can call parent class init method? अब इसको अगर कॉल करवाना है तो कैसे करवाएंगे? So inside this child class we'll define init और यहां पे क्या लिखेंगे? जस्ट सी, मान लो यहां मैं कुछ नहीं डालता हूं, ये ब्लैंक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? कोई मैसेज, हेलो पेरेंट, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और यहां पे एक फंक्शन लगाया है, द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? सुपर। Why we are using this super keyword? And when we are using super dot init, it means what? मैं किसको पॉइंट कर रहा हूं? सुपर कीवर्ड पेरेंट को पॉइंट करता है, राइट? तो मैंने अगर सुपर कीवर्ड सी क्लास में लगाया तो ये किसको पॉइंट कर रहा है? सी क्लास के पेरेंट को। और बाय डिफॉल्ट सी क्लास का एक्टिव पेरेंट कौन है? ए। अभी हम लोगों ने देखा था सी क्लास का एक्टिव पेरेंट अभी कौन है? ए। सो व्हेन वी आर यूजिंग सुपर डॉट इनिट, इट मींस ये किसके इनिट मेथड को कॉल कर रहा है? ए क्लास के इनिट मेथड को कॉल कर रहा है। और इसको कॉल होने के लिए क्या पास करना है? मैसेज। तो मैंने यहां पे क्या पास कर दिया? मैसेज। तो अब when I'll create an object of C, so super function will call the init method of parent class. And the parent class init method कौन सा है यहाँ पे? कौन सा parent है अभी? एक्टिव parent कौन है? A. ए। तो A वाला init method अब कॉल हो जाएगा। Let's see. तो सुपर कीवर्ड के थ्रू हम किसी भी पेरेंट क्लास के इंफॉर्मेशंस को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला तो ये तो हुआ सिंगल इनहेरिटेंस में। अभी भी हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। सिंगल इनहेरिटेंस में इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं, और अभी बाय डिफॉल्ट हमारा अप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल इनहेरिटेंस, एक ही पेरेंट काम कर रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एक तो समझ गए कि if a class is having parameterized init method and C class don't have any parameters, so when I'll create an object of C class, तो वो A class को कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि A class को कॉल होने के लिए क्या चाहिए? मैसेज। So in this case we have to call this init method inside this child class, and to call the parent class init method, here we are using super keyword. Is it clear? यस। Okay. Now the second question is what? Both class is having the same method, get info, and B class is also having get info. नहीं, पहले ये इस प्रॉब्लम के पहले कुछ और करते हैं। अब दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? ए क्लास का इनिट मेथड को मैंने कॉल कर लिया। हाउ वी कैन कॉल बी क्लास इनिट मेथड? मैं यहां लिख रहा हूं सुपर, तो सुपर बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट कर रहा है? ए क्लास ए को। को। बी को तो कर नहीं रहा। And if we are having multiple parents, so how we can differentiate? So in that case, here we can write like this: a dot super
सुपर नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए डॉट इनिट, क्योंकि सुपर बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट कर रहा है? ए क्लास को, एक ही को पॉइंट करेगा ये। जब भी आप सुपर यूज करोगे किसी एक पैरेंट को पॉइंट करेगा, तो दूसरे पैरेंट को कैसे दिखाएंगे? सुपर के पास ये फीचर नहीं है, दो बार नहीं ले सकते आप सुपर कीवर्ड किसी भी क्लास के अंदर। So how we can differentiate B? B को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर सर ए को नहीं करना है बी को करना है तो ऐसा भी हो जाएगा। ये तो बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है, ए को आपको कॉल नहीं करना है, सुपर लिखे यानी ए बाय डिफॉल्ट कॉल हो गया। So when I'll write b dot init, so what happens in this case? मैंने लिख दिया यहाँ b dot init. Let's see what happens in this case. Selected तो नहीं है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन, ओके सेल्फ नहीं लिखा ना मैंने। दोबारा रन करते हैं, जैसे ए क्लास इनिट भी कॉल हो गया, बी क्लास इनिट भी कॉल हो गया, ए क्लास गेट इन्फो भी कॉल हो गया। तो बाय डिफॉल्ट अभी अब दूसरा प्रॉब्लम भी समझ लेना होगा। अब देखो सुपर लिखने का मतलब फर्स्ट पैरेंट, सुपर किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट पैरेंट। सो इन प्लेस ऑफ सुपर वी कैन राइट लाइक दिस, अगर आप सुपर नहीं लिखना चाहते हैं one required parameter, oh problem है, self नहीं लिखा हुआ है। Let's see. So in this case also a class init method is called, b class init method is called, a class getinfo method is called. So if you are having multiple parents you can write like this, you can differentiate. तो सुपर कहाँ यूज करेंगे? ओनली इन द केस ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सुपर को आप एक ही पेरेंट के साथ यूज कर सकते हो, और एक पेरेंट कौन से इनहेरिटेंस में होता है? सिंगल इनहेरिटेंस। सो इन द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस यू कैन राइट लाइक दिस, A class init, B class init. Now C class want to access A class getinfo and B class getinfo both. मान लो C class के पास भी getinfo है, C class is also having a method called getinfo. Def, and here also we are using getinfo. अब जब C क्लास का गेट इन्फो कॉल करेंगे तो A और B दोनों का गेट इन्फो चाहिए। सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट? सो वी कैन राइट सेम लॉजिक, A डॉट get info and b dot get info. सर बाय डिफॉल्ट तो ए का गेट इन्फो तो अपने आप कॉल कर ही रहा है कोड में, तो बी को पॉइंट कर सकते हैं ना फिर तो। चलो अब ये भी डाउट समझ लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। अब जब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी क्लास के अंदर गेट इन्फो, तो अब ये गेट इन्फो किसका कॉल होगा?
नहीं ये सर, ये बाय डिफॉल्ट ए को मान रहा है, बाय डिफॉल्ट बी को मान सकता है। नहीं, कैसे मानेगा? बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट बिहेवियर इसका क्या है? पेरेंट वो किसको मानता है? फर्स्ट वाले को मानता है। ए को मान रहा है ना। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये गेट इन्फो जो है वो किसका है? बाय डिफॉल्ट तो ये वाला कॉल होगा। सो टू डिफरेंशिएट वी कैन राइट लाइक दिस, ए का गेट इन्फो, बी का गेट इन्फो। तो अब सी का गेट इन्फो कॉल होगा तो वो किसको कॉल करेगा? ए वाले को भी और बी वाले को भी। And here we can write one more message like print C class get info. So कैसे काम करेगा ये? When I'll call obj.getInfo, तो सबसे पहले ये कॉल होगा, ये इसको कॉल करेगा और इसको कॉल करेगा और फिर ये प्रिंट होगा। ऐसे। So let's see. और B class init method called, ये तो आया, ठीक है। और प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? लाइन नंबर 20। ओके, प्रॉब्लम वही है, सेल्फ, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। Let's see. A class init method called, B class init method called, A class getInfo called, B class B class setInfo called, C class getInfo called। B वाला कहाँ गया? B सर वाला, सेट आपने गेट वाले में। और सेट इन्फो लिख दिया है क्या? जी यस सर। ओके, मैसेज गलत लिखा हुआ है, जी जी। ये गेट इन्फो लिखना था ना। ठीक है, कॉल हो रहा है। Let's see. A class init method is called, B class init method is called, A class getInfo called, B class getInfo called, C class getInfo. So using such type of concept, we can resolve the problem. Is it clear to all of you? क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए हम लोग? प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व किए? पहला, इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल होने का प्रॉब्लम सॉल्व किए, राइट? So if we are having multiple parents and I want to call all the constructor of all the parents, so in that case we have to differentiate which init method I want to call. So here we have to specify A class init method, this one is B class init method. So when we will create an object of C, so first it will call A class init method, then B class init method, then C class init method, right? If multiple parent is having same method with same name, with same parameters, so how we can differentiate? So inside C class getInfo, I want to call the method of A class getInfo and B class getInfo. So how we can differentiate? I can write A dot getInfo and B dot getInfo. So now we are able to call the constructor of parent like this, and we are able to call the functionality of parent. Is it clear to all of you?
Others? Okay.